Hello, 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 hello. Hello. So basically, we are going to start our today's session. For this, we will be having a revision, compact revision of the physical geography, and we would start from the beginning, the Earth basic latitude and longitude session, and we will end up. Basically, we are going to start today's session. For this, we will be having a revision, compact revision of the physical geography, and so today we're gonna start this and. So we will be starting this from the beginning, and we will just take a good look at some of the important concepts, and we will just swipe up some of the things which is not very much important for our exam, but we will having the detailed discussion on something which is going to be the main part of our subject. That is the main conceptual things that we're gonna see in today, and I will be covering whatever I could do in about. I have set the timer. I set the timer for about. Let me check it for you. Is it working fine? The thing is happening that just wait for a while. Let me take it for a check. 1 hour 52 seconds. 1 hour 52 minutes. Are we taking it? So it's about 2 hours from now. Let's take it for this. The timer is running. The timer is running. It's on the way. So now let us go to our revision part. So now what happened is that first of all we can see this. This is the Earth. This is three things. There's a lithosphere. There is hydrosphere. There is atmosphere, and and this and this this is constituting our Earth overall biosphere. So biosphere is something which is constituted of these things, as we have seen here. This whole
thing. Let me broaden this. Yeah, these things. And now there is some water bodies discussion. This is something that I am doing at the first because many people are not knowing some basic elements of things that they need to know before the starting. Something like just like a sea, bay, gulf, and oceans, a strait, channel. What is these things? Land masses. For land masses, we use certain things just like island, peninsula, thick, and this isthmus, continent, and these things we use generally. Now, let's move to something like Iceland. It is something like basically covered all around with water, and then after we can move to sea. Sea is something like which is covering like at the country level. It is country A, then it is around region this is sea A, and when this many countries are there, it's like the concept of if this is Australia. Let me do it for you. This is if this is Asia and this is Africa, this is Australia, then the water body here is just having contact with these three continents. So basically the water bodies at the country level, it's sea. For example, the water body here will be Arabian Sea, water here will be Bay of Bengal. So basically, the seas are these water bodies which are associated with the country at the country level, and this is something this is like it is known as oceans. So oceans are something which is at the continent level. Okay, and for your information, I would be giving continent are at some important things like on the basis of area, and on the basis of population, we can arrange the continent as the largest one is on the area, Asia, then Africa. This two things are common in both the equations, inequality with what you are doing. And then after on the area basis, it's Africa, then it's South or what you say, North America, and it's Asia, this Africa, this North America, this is South America, and what you're gonna see here is on the basis of area, it's Europe. Oh, no, 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 it's not Europe, it's Antarctica, and then it's Europe, and then it's Australia. And I know we can also plot this Asia, then Africa, then on the basis of population, after this is Europe, after this is North America, then South America, then Australia, then Antarctica. Okay, so basically we did it on the basis of continent level. At the continent level, we did it, and then after we will go moving to the some important like oceans. Many people even in their reading they can't able to identify. See, this is let me draw this for you. This is South America. This is North America. This is Asia, and this part is Africa. This is Europe. This is Africa. This is Australia. Then we can say that. Let me draw this for you. This water body is here. This, 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 and this. This both are same, so I'm not drawing this. So you can say this is in the continuity with this. Okay. So we are saying that this is at Antarctic, Antarctic. This is Arctic Oceans. This is Indian Ocean. This is Southern Sea, and this is also known as Antarctica. Antarctica. Or what you say? Antarctic Ocean. Sorry, this is Atlantic. What it did. Atlantic Ocean. And this is Pacific Ocean. Prashant Mahasagar. So basically we have five.
First one is Arctic, second one is Atlantic Ocean, third one is Pacific Ocean, Southern or Antarctic Ocean, Antarctic Ocean, and this is Indian Ocean. We have five oceans. We have complete knowledge about this. Now, what we have to do is Bay and Gulf. Bay is something like water is in the sea type. Water is there. Water is there, but there is sea type. And Gulf is like there is some means the width is not so wide. It's not wide, not wide entrance. Okay, so there is not so wide entrance. And then after we know about peninsula, it's something like on the three sides it's water, 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 like India peninsula, water, water, water. And then after we can move to uh, what we say, way we did, sea did, Atlantic Ocean, and so now we come to shape of Earth. Shape of Earth is studied under geodesy. So it is basically a mathematics survey and attempt. It's a science in which we attempt to study the shape and size of the Earth based on some surveys and mathematical calculation, mathematical calculations, and we find out that the shape of the Earth is geoid. So we find out that the shape of Earth is geoid, and we also know that the geoid in certain sense that the Earth shape is something like this. Let me take this for you. This is something like that. So here what is happening? The the circle shape is something that we can draw here. The different shape is like so basically this is more or less a type of circle. We see this and this both are same. But here what is this, that this is A length and this is B. Then B is greater than A, means there is a bulge out at equator. Bulge. We can see that there is a bulge here at the equator. Since there is a difference between this A and B is means B minus A is about 42 kilometers around. There is a difference 42 kilometers of the difference between the areas. So here see this is North Pole and this is, we can see that there is a South Pole. So basically this is concept here what we are doing. This is concept here what we are doing. So now we would be doing some important calculations next regarding this is also known as oblate spheroid. Oblate spheroid. So this is another name we can give to geoid shape, that is our Earth. So this is Earth unique shape that we can see. Geoid is Earth unique shape that we can see here. And then after we can see that we will talk about the latitude and longitude. And this is something which is not what we had studied in class 7th. This is some we will deal about the basic origin of this, how we began to define its origin. See, for example, this is latitude, and this in latitude, what you can see, this is what we heard from our childhood, and this is the concept where we see is longitude. In this longitude, you don't have to draw like this. This is not the longitude lines. These are the parallel lines, but in this, we have to draw this because, see, this is 90 degree. So if we do a cross section of the Earth like this, we will cut the half slice like how I can show you. I don't have any 3D shapes to here, but let me do this for you.
For example, this is for example, let me do this for you. Yeah. For example, if there is something like that, we do this. Okay, so we can see that longitudinal lines are something like this, and latitudinal lines are something like this. So we can see what is common here is that in longitudinal lines, these all the lines will be like a sphere with equal radius. Okay, but here, and also their center lies on the equatorial plane. Means, for example, this is, let me do this like this. See, if this is something which is along the North Pole and South Pole, then all the circles that we draw here, means all the circles, some 50% of the circles that we see are this side, and other 50% are on the behind this figure. So what we see that the center lies or center crosses this line. Okay, but here what you see, the equatorial latitude is 0 degree, and all the equatorial lines are parallel to this equatorial plane. See, for example, this is plane, then all the lines would be parallel to this same with the varying radius. For example, if this is equatorial plane that we cut off, this is equator, and the maximum distance from the equator to center here is, and then after the another we define this. So this I drawn some, as we can see, this is something like following a line. So this line is always coinciding with the center of the geoid. So center of our geoid is something here, and these lines. And in the case of longitude lines, this is something which is difficult to express in a 2D way, because this is a highly 3D concept, and we can see that this is all the lines are crossing this line. The center, or we can say that the diameter always crosses, each diameter of all the longitudinal plane is crossing this line. But in this case, there is no something like that. It's parallel to latitude. All the latitudes are parallel to each other. But in the case of longitude, they are not parallel. They are coinciding with each other. Yeah, they are seen to be like this. See, if we take like this is something. They are not parallel. But in the case of longitude, you draw like this. This is parallel. Okay, so this is concept like this is parallel one, this is not parallel ones. Now we will come on some calculation part. So for example, for this is latitude. So this is latitude, and this latitude, what you see here is that there is latitude angles, latitude angles, and we see that latitude lines, and this latitude angles and latitude lines make up our whole concept. So what is this latitude angles? This is angle, like for example, this is 0 degree, this is 30 degree, or this is 10 degree, this is 20 degree, this is 30 degree, and here is 90 degree. Then how many degrees are there? There is degrees 90 plus 90 below this, and 90 is plus 90 plus one equatorial angle, 0 degree, means it's 181 latitudinal angles are there. And for the latitudinal lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there is 181 minus 2, means because on the pole, if we draw a line parallel to this on the 90 degree, then there will be no any line, it will be equivalent to a point. Okay, because at 90 degree there will be no any curvature will be 0. Okay, so here minus 2, it's 179 lines. Okay, so it's 179 lines are there. And now we will be looking after the longitudinal lines, and these longitudinal lines are like this, and I say that it's not like that, it's like this. So be cautious around what are you preparing for. So it's like this, and this whole thing, what you say, that there is about 100 and how much lines, means for example, there is, you are drawing like this, this is something in the center, that's known as prime meridian.
prime meridian, you say it. This is also like when you get geoid cut like this, then this is 0 degree. For example, if this is prime meridian, this is 0 degree. Then you go like this, like this, like this, like this, like this, like this, and this is something like that. So here also 0 degree. So one degree you are just extending, and on the top we see like this. Okay. So here, what is the fact I want to tell you is also lines and angles. We will also talk about lines and angles. For the lines, what you see here, this one line, two line, three line, four line, five line, six line, seven line, eight line, nine line. This nine line means 90 lines. For example, from 0 to 90 degree, there will be 90 lines. And from here, there would be 180 lines. And 180 lines will be equivalent to this 0 degree. So there will be how much lines? 1, 2, 3, 4, 5 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 lines. Overall 180 lines. And because 180th line is coinciding to 0 degree. So we can say that there is 180 lines. And for this it is 180. And after this, what we see here is the angle. Angle here is something we can say 1, 2, 3, 4. It's something like that. You can check it for you. And I will be just gaining a fast pace for now. For example, for latitude, it's used for latitude. I'm just giving a brief summary for everything. Don't think that I would be doing every mathematical stuff because it's not necessary in such case like an exam, but this is something important for understanding something else part which we are going to cover in today's revision session. So latitude is something which can be used for determining the geographical climate of different region of the over the earth. And for the longitude, we can say that it is used for determining the date and time. And for the latitudinal and longitudinal both, when where it intersects, this gives an exact location. And we also know that for the time and date, longitude use. For time and date, what we use, it's longitude. For time and date, we use longitude. And longitude will be like, there is a concept related to the rotation of the earth, that is from west to east. Earth rotates from west to east. This is earth. It's rotate like this, west to east. If you see like this, west to east. So it's rotates from west to east. For example, east, say west. From east to west, if we move, then we gain time. Or yeah, we gain time means there will be negative sign used. And from west to east, we will what? We will lose time. For that, we use plus. I'm using opposite of what I'm saying, because in gaining time, what you are doing, you are subtracting the time. For example, 9 hours are there to clear the paper. So if I say you are getting some time, extra 2 hours, then it will be like you are on the seventh hour, means you are subtracting 2 hours more. So that's why in that concept I can say that seventh. And the same for this is like examination to be completed in 9 hours overall. And I'm saying that you are uh, gaining time, means what you are losing time, then it means that it's about 11 hours, means because you have to finish it earlier. So that's why, means you are behind by the time. You had already passed the examination deadline has almost passed by 2 hours. So basically when we say that we go from east to west, then it was what means our earth rotates from west to east, then we are going with the time. Then if here is 7 p.m., then here we go in about 10 minutes, then here what will be, here it will be more than 7, means 1 hour if we take, I mean, then here will be something like months x, then we go to x will be what, less than 7, something like that, got it. So this is something like temporal concept. I will temporal and geographical concept that I will be discussing in detail right now. So give me a minute for break.
So now let's focus on this. West to east, if will come from west to east to west, then the time will negative, and for west to east it will be positive. So for example, Earth take 23 Earth take 23 hours, 56 minutes and 4 seconds to complete its overall rotation. So about 24 hours, it's equivalent to 24 hours, and this would be like 24 hours in to cover 360-degree, then 1 hour it will cover 15-degree, and 1 degree will be covered in 1 hour, then one latitude will be means 50, sorry, I mean to say 15 latitude will be covered in 1 hour, then 1 hour will be covered in 1 hour by 15. 1 hour will convert to 60 second 16 minutes. It will be 4. Means in 1 degree there will be 4 minutes of time coverage. So there will be difference of 4 minutes in every 1 degree we cover. Now let's see, for example, I'll be giving a question for you. Dateline concept will be also dealt here. First, yeah, if a flight for about, I will solve this question for this one time. 30-degree east to 45-degree west at 10 a.m. 10 a.m. we go, then what will time it will reach? 45-degree west. 45-degree west. If the time of flight is 2 hours. So listen what we are saying. If we are flowing from here at 30-degree east, 30-degree east here is like east is 30-degree this. Let's say this is 30-degree east, and we are covering to 45-degree west. 45-degree west. This is, see the difference. 30 plus 45, it's about 75-degree. Okay, and what we are taking 2 hours. So estimate the time gap between this. Means for example, there is 75-degree, and 75-degree means 75 into 4 minutes divided by 60, 15, 5 hours. 5 hours difference is there in this time. So I would mark here, and if we are going from this to this, if we are going from this to this, remember, if we are going east to west, time will be added. Okay, added. So if here it's 10 a.m., so there will be 10 plus 5 means 3 p.m. But if we took, no, time will be subtracted now. If you are moving from east to west, time will be subtracted. It means 10 minus 5. It's 5 a.m. And also we took 2 hours to go there. Means it's been 2 hours more than this. Means 7 a.m. So at when we reach here at W, it would have been 7 a.m. that day. Okay, so this is something concept, and the date line concept is like we know from earlier that there is a Bering Strait, and this is Russia part, and this is Alaska of USA, and there is a gap between this, like this, you know very well. This gap is basically this line is not a straight because to there is very much a small island here, so to this group of islands should be remain in a one time, means for defining the time correctly for the island, because if a same family live in this island and this island, then they will be appropriately living in a different dates on the same day, even same day same time but different dates, that would create an vague things like that they can't able to know this. So international date line is there, which is like considering the partition of geographical area. That place is very much nice. And when we go this to this, there will be addition of there is a 1 day minus, and from this to this there is
additional day. We get an extra day. I tell you right now, if we move from west to east to west, the time will be negative. So if we get a time, then we will get extra day. If we go from here, this is also east to west now. And time is subtracting, means we are getting extra day plus. And if we are going from here, what we used to do, west to east, we used to add at the time, means we will add the time, means we will get a less time, means it's plus, means we will get less time. Here it's plus, so here it gets a date is less and time is plus. Okay, so we can say it, we will add the one in a date, and here is a Japan, here is America. So if we come here, the date will be minus. If it is 11, then it will be 10. It will be 9. It will be 8th of Jan. So here we will go. Then here will be day loss. Don't you see it like a day gain? It's like a day loss. Here you see day gain, and day gain will be denoted by minus. Okay, because you gain one day. See, if we move from here to here, you are अभी यहाँ पे जितना समय हो रहा होगा, यहाँ पे जितना हो रहा होगा, if we move from this to this, then इधर समय क्या होगा, कमेगा. मतलब यहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ 6 बजेगा. यहाँ से यहाँ आओगे तो यहाँ अगर 5 बज रहा है तो यहाँ 4 बजेगा. ठीक है, सॉरी 3 बज रहा है तो यहाँ 4 बजेगा, क्योंकि यहाँ तुमको आ रहे हो तो यहाँ पर जल्दी जा रहे हो. ठीक है, तो ऐसा बढ़ता है. नाउ डेट वाले कंसेप्ट में क्या था, कि डेट वाले कंसेप्ट में क्या था, इस केस में तुम्हारा इधर जा रहे हो तो तुमको डेट कम होगा. जैसे 11 तारीख है, इधर 10 हो जाएगा, और इधर 9 है तो इधर 8 हो जाएगा. सॉरी 9 है तो इधर 10 हो जाएगा. समझ रहे हो, इधर डे गेन हो रहा है. इसको डे गेन बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? इसको डे लॉस बोलेंगे. ठीक है, डे लॉस, क्योंकि आपको एक ज्यादा दिन हो गया तो आपका एक दिन कम हो गया ना. मतलब आपको 10 दिन काम करना था, 10 जनवरी तक काम करना था, और आज 9 तारीख है. ठीक है, तो और एक जगह 8 बज रहा है, 8 तारीख है, तो इसको डेट ज्यादा है, लेकिन डे का तो लॉस हुआ ना इसका, एक दिन का. कि यहाँ 8 ही है, इसको एक 2 दिन मिला, इसको एक दिन और मिला है कंप्लीट डेडलाइन के लिए. समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे. So here we'll be now talking about the motions of the earth and seasonality. So basically we today know that there is a concept of dateline concept. We know about the concept of what we know today is the concept today the concept of dateline concept, time concept, and also latitude longitude, also time, 23 hours 56 minutes 4 seconds. This also you did it. And also we will be covering this revolution part. Revolution part will be something like it's done in 365 days 5 hours 48 minutes. Remember this, 365 5 and 48, and this will calculate. Then we'll find out that this extra 5 hours is this extra 5 hours 48 minutes for about 4 years. It will give 24 hours. We will calculate this. 4 hours 48 minutes for 4 years, it will give 24 hours, means one extra day. That's why we celebrate leap year. Okay, leap year for every 4 year. Okay, so there is something, this is occurring. See, rotation and revolution is something like season is changing, season wise season is changing, and climate is changing, means climate is not changing, basically season changes, the climate is fixed. Rotation does day and night changing, and this season changing is done by the tilting of the earth is tilted, and revolution. So basically for the seasonality, what is responsible is revolution and plus tilt. If there would have no been tilt on the earth, then one type of climate would be there and one type of season would be there, because this changing. And also there is also shift in the axis. See, this axis also rotates. The earth is tilted to something, and this tilt is also changing its, but it's not a matter of concern in our syllabus right now. So here we see that in 90 degree of the light will give, मैसेज आता है इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा. ठीक है,
सामने आता है तो वो पूरा जाता है, इधर इधर कम पड़ेगा, इधर ज्यादा पड़ेगा। अभी तो छत पे से देख के आ रहे हैं। अगर आपको क्या है कि फैक्ट 90 डिग्री इंसिडेंस विल बी लाइक मोर इम्पैक्टफुल होगा, ज्यादा हीट, यहाँ इंसोलेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, आपको हीट कम लगेगा, मतलब लेस हीट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली वी नो दिस। एंड देन आफ्टर टिल्ट का बहुत जरूरी होता है। टिल्ट अगर है तो आपको समय के साथ साथ इस जगह पे ज्यादा मतलब डिफरेंसेस पैदा होंगे। तो डिफरेंसेस एच ए बी अगर सेम है, ये है, तो ए बी सी अलग अलग हीट मिलता है, मगर कोई सीजनैलिटी नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता। तो सीजन इज चेंज, सीजन इज ऑल अबाउट चेंज, सीजन इज ऑल अबाउट चेंज। तो चेंजेस जो आ रही हैं वो आ रही हैं आपको टिल्ट की वजह से, क्योंकि टिल्ट जो है वो टिल्ट, इधर वाला टिल्ट को एक साल में 6 महीना गर्मी मिलेगा, और एक बार एक साल में ऐसा होगा, क्योंकि दिस इज अराउंड सन। अभी सन यहाँ है, अभी सन यहाँ है, तो कभी इधर वाला नॉर्थ वाला इधर घुमा रहेगा, कभी साउथ वाला इधर घुमा रहेगा। तो बेसिकली ये नॉर्थ दिखे घुमा हुआ है, इधर सन के तरफ नजदीक है। और ये, और अगर केवल गोल रहता ऐसे, मतलब गोल नहीं, मतलब ऐसे रहता, तो किधर भी रहिए आपको सब जगह से एक ही टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हीट इंसुलेशन अलग रहता, मगर सब सब डोमेन में, मतलब सब स्फेयर्स में, जो नॉर्थ एंड साउथ है उसमें अलग अलग रहता, लेकिन सेम रहता। मतलब यहाँ पर जब है, यहाँ पे भी तभी है। तो एक इंसान कभी भी चेंज महसूस नहीं करता, एंड चेंज महसूस नहीं करता मतलब सीजनल नहीं चेंज, सीजन चेंज नहीं होता। दैट्स वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। एंड नाउ आफ्टर दिस विल बी गोइंग टू सी, there is a concept here, sun, the four type, this, 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 this. This time of year is something like no any problem, no, this is problem, this is something which is have no any changes. For example, here north pole and south pole is something like equidistance from sun, but here it is like north pole is nearer and here is south pole is nearer. So in this case north hemisphere will be suffering um, heat intense, and here south pole. So what are here we doing here is right now this, and this is something like, we can see this as a cycle. You can see that this is something like one this is winter, this is winter, this is winter, this is winter, okay. Winter in North America, North Hemisphere. I'm talking about North Hemisphere on the view respect of North Hemisphere. This is North Hemisphere. The sunlight comes here, and then after it goes this side, and this goes this side, this goes this. Now North Hemisphere is experiencing summer here. So this is somewhat about December, January, November, December, January, February. This is around March. This is along May, June, July. This is around August, September. August, September. It's around August, September. So this is something like moderate. Here we face autumn. Here we face spring. So this is rainy season. This is somewhat losing. Means the heat is started to build up because we are going to face the tilt is around north hemisphere is going to face sun more intensely in this quadrant. So basically, this is the time 22nd of December. This is 21st of March. This is 21st of June, and this is 23rd of September. So this is a day exact where it is like 90 degree. According to 90 degree, so this occurs at 22nd. This occurs at not it. Now we will be the variability of day and night. You know this. Now we will be the variability of day and night. You know this. So now the rotation and the revolution tilt will, you have seen this, revolution and tilt will give the season and day and light gap also. We also know that this seasonality, this tilt will offer difference in day and night during winters, and why there is
more day duration during the summer and low night duration in winter. So yeah, high means mm, more night duration in winter. So basically, this is something concept related to the tilt. The angle of incidence of the sun rays in the north hemisphere always increases during the time of summer. So this is basically what we know about the summary part. Then we will talk about this position of the sun on the first. You have to learn this 4 date, because these 4 dates are something which is most important here. As we can see here on this, as we draw as of September, this is March, this is June, and this is December. So on this December, the heat is this on this part, the heat is on the equator. So we can say that on the 21st, here it is June, here it is September, here it is December, here it's at March. So on it 22nd of December and 22nd of 23rd of September, 21st of June, 21, 22, 23, and this is 21. So this is 21, 21, this is 22, 23. You remember these things, it will be helping you for many MCQ that you can see in the examination. 21, 21, and here it is 22, 23. Okay, so basically this is the time when it is exact forming 90 degree on this plot, and the position of the sun is on the Capricorn. Yeah, on the December part we see it's on the Capricorn, and when it's about to move from here, then we celebrate Makar Sankranti also. Makar Sankranti, because we are going to celebrate it, because in this Makar means Capricorn, and Sankranti means sun is going to enter the tropics, and in the tropics when it enters, the whole things we can do change again, and we gonna welcome our sun in the tropics. And since India is a tropical country, the tropics temperature and this things matters most for the India. And this is the first 21st. Here the sun position is exactly on the equator. 21st of March, here also it's on the equator, and this is here in the Cancer part, Cancer. So this is known as solstice. This position is of sun is known as solstice, and this part we know it as equinox. Let me write for you this equinox. So basically here we can say that the night is more, day is more, both same. Basically we can judge it properly. There is what is something like, don't worry. And we know that summer when process now there is summer season, winter season. Here is something, here is something, here is something. As we can say this, summer को होकर गुजरे autumn, and winter को होकर गुजरे, here it's again autumn, and ये spring होगा winter को होकर गुजरे तो basically spring comes after August, September. During the time August, September, it's the spring time. So solstice, and you know that this is something 6 months. So basically we find it from here that the sun always remains between this. So there is a change from here to here. There is a cycle. There is a sine wave. You can see this. It's from first to 2, 3, 4. It cuts equator 2 times basically. First when it started, first let me start it from the equator part. It goes to Tropic of Cancer, then after it again comes to equator, then after it goes to Tropic of Capricorn, then again to equator. So basically this is like Tropic of Cancer, this is what Tropic of Capricorn, okay? And this is equator, this is equator, this is equator. So I will give a dash here and I will give a solid bump here. So this is what we knew.
Also many we will see here. You don't worry anything. We also know the concept like the sun is here, the earth follows parabolic path, and the sun when is nearest to the earth, then it's known as perihelion. Perihelion, and this aphelion. This aphelion, this occurs around the 4th of July, and this occurs about 3rd of January. So this is something that you must know, because we basically associate these things to our winter or summer, but this occurs for whole earth, not for north and south, because we know basically in the winters, the north hemisphere winter, and in Australia there is in the south that is suffering summer. So basically if it has been this distance which causes the seasonality, then it would have been same for both north and south, not because this distance will be so much. But what happened is that it's not like that. Anywhere it should be, the tilt is always matter. Yeah, so this is something like in one rotation it comes to this time here, and one time here it's on the 3rd of January, and it is on the 4th of July. So important dates that we have learned today so far is, we you should learn it in a trick, like here it's September, here it is March. This is something like when the sun is on the equinox, and here it's on the Capricorn. This is not solstice in this. Here it is 20 December. It's December, and it's March. Yeah, it's June. It's June. Now what we have to do here is 22, 23, 21, 21. This is something like we knew it today, and for that also the nearest one is 3rd Jan, and it is 4th July. Okay, so 4th July we got it from here. And now let's see this, anything new that we can see here. So season is not due to this, we know season is due to the tilt. Season does not depend upon the radial distance from the Earth's sun. And also India has having Tropic of Cancer here, so India's half part is in the temperate, and in the half part is in the tropical, because India is dissected here at the 23.5 degree in the north. So basically this is something that we need to know. Now we come to the three part that we talking today. That's the lithosphere, hydrosphere, and third one is atmosphere. So lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, this will be leading us to the climatology. This will be leading us to something like beneath the earth's surface, like crust, mantle, core, volcanism, like natural disasters, something like that related to the inside of the interior of the earth, maybe exterior also sometime when we discussing some important physiographic topography of the earth, and the mechanism through which the physiography of the globe is now visible, that we see like different type of mountains are there, and different types of rivers, and different physiographic patterns that we see. And in this paradigm we will find out the basic reason behind this, and also in this hydrology will come along to see in the oceanology and many things like that, different type of water sources. This is something like which dedicated to the water bodies on the earth. So we'll be just looking at the lithosphere, and for the lithosphere it's lith means rock, and for this rock what we know, this lith means rock, and this rock comes from soil, and the soil is used for agriculture, and agriculture is means it's like obeying the rules for growing the development, and for primary means growth of a nation. Its economy is something which is driving it, is the driving force. And for that rock, where it's been means rock, from rock it's soil, but from where it's rock formed, from the lava that cool down, this is important. And this from volcano, and volcano is from interior of the earth. So this is something that I had related the rock to the interiority of the earth, that is on this globe. We can see that there is something that on the face, and there is something on the dissection that we will find in today's class, in this today's revision session, that there is something that we don't know is and something that is occurring beneath our lakes, our homes, and something that we don't know even. So this is the dissection of the earth.
So basically on we will discuss about the interior of the earth, how it's made up and how it is not. So basically there is many things that we will confirm from here regarding the volcanism, earthquakes and many types of things. So for example, make it clear that on the continent and on the ocean there is different type of surface, land surface beneath it. It's a surface, rock, crust, continent means crust, continent, okay, continent, crust, rock, ocean, crust. And in the crust we have different types, continental crust, and there is oceanic crust, and comparatively less than continental, because we know that here it is like this is oceanic crust, and this is continental crust. And when we will see this, we'll find out what I want to say. Crust, lithosphere, rigid crust, comparative less than continental. The overall thickness of the crust we talk about like for 34 kilometers an hour. So is there any difference between this crust and this crust? Yeah, for sure. This is made up from Sial, this is made from Sima. How they formed, both are crust, but how they formed, there's a different story. This is made up from silica and aluminium, this is from silica and magnesium. Basically we will know this is something from here, that this is ocean for example, and this is about 34 kilometers. So keep it in mind. This will be very important for you to know this, how these things vary in their composition. It's the part from which it's formed. So for example, I will take you to the different core of the earth. For example, if our core, the diameter of our earth is how much? Its radius is 6400 kilometers. Okay, so from 34 kilometers here to here, and from here. So in this three part, what we see, this is which is 0 kilometer. This is something I will draw for here. This is something 2900 kilometer, and from here it's 6400 kilometer. So this part is something what we know is like, so this is core. So basically this is core, this is mantle, and in this 34 to 2900 kilometer, it's mantle, and this 34, this is crust. So basically what I want to say, this is earth, this is center of our earth, first, second, third. This is 2900 kilometer, this is 6400 kilometer, there is 0 kilometer, this is 34 kilometer. This is our crust, this is our mantle, and this is our core. And this mantle is made up from Sima, keep it in mind for now. And this is made up from heavy metals like nitrate, nickel, ferric, means nickel, iron, heavy metals. Okay, heavy metals होता है Sima is from silicon and magnesium. So in 1930s, Earth homes, it's a radioactive elements which poses self-emitting energy in the radiation. Means it said that why this is heated inside, or how, means when we go inside the earth there is a heat we see. The field of heat is due to the radiation that is emitting continuously from the radioactive elements inside the earth, which is responsible for this emitting radiations and thus emitting heat. So basically observation was like Tt upon Tx, means temperature per gradient of he draw the gradient graph. It's per 1 degree Celsius, means as we go x kilometer, means 1 kilometer, means when dx means what he choose is about degree Celsius per 32 meter. For example, if we go inside this, for every 32 meters there will be rise of 1 degree Celsius. So basically in the core there is temperature like 5000 degrees Celsius, and we can estimate that this is positive thing. Now there is something not a clear distinction, means this is not something like very much broad distinction that we made in this. This is core,
say this is core, this is mantle, and this is crust. Core, mantle, crust. But this is not till now. See, crust is not there, only means the crust is there for 34 kilometers, but 100 to 200 kilometers will be in rock, in solid. Means the lithosphere is not what we say is the crust. Lithosphere is not crust. Lithosphere is crust plus 150 किलोमीटर के आसपास. मीन्स समझ रहे हैं. मीन्स समथिंग लाइक शुरू से लेकर अंत तक 100 से 200 किलोमीटर इट विल बी कॉल्ड एज lithosphere. Will be in rock. Means lith is rock basically. So anything means up to here it's rock. It's up to here it's rock. I know it's inside the mantle, but here it is division based on the what is rock and what is not. So about after 100 meters the temperature rises, and after this the temperature rises so that the rocks cannot be in their solid state. Therefore they become in liquid. So there is no any solid rock. So continental lithospheric length. Continental lithospheric length है इसलिए ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वो क्यों ज़्यादा है वो हम पता करते हैं कैसे कि ऐसे है. तो ऑफ कोर्स ये तो सेंटर से कम ज़्यादा दूरी पे होगा. ये x है y है तो x ऑफ कोर्स y से ज़्यादा होगा. सो बात क्या है कि बिलो लिथोस्फीयर प्रेशर ऑफ क्रस्ट ऑन मोल्टन रॉक सॉलिड रेडियोएक्टिव हीटिंग सेमी सॉलिड बन जाता है. नाउ व्हेन क्रैक्स ओपन अप इन द क्रस्ट, pressure releases molten rock, liquid, and volcano burst up with the lava, and this solid will be like 200 kilometer. Semi-solid will be about means now on the division, not on the basis of crust and mantle. We will be now dividing it on the basis of solid and semi-solid. Then we will find out that this is liquid. This is around like semi-liquid, semi-solid, and this is around solid. So this is what we call as lithosphere. I am not making a clear distinction between the crust, between the mantle, and between the core, but on the basis of their physical property, I am describing this thing. And for the semicircle, it's known as asthenosphere. This is the most important thing that I wanted to explain. This is asthenosphere, and this is a part of upper mantle only. It's not like covering whole thing. Like mantle might be here and it's like here. Means mantle is constituting of lithosphere also, asthenosphere also, and it's also covering about liquid. Means mantle is like, and now I'm dividing this. This is 34 kilometer, 2900 kilometer. This is 6400 kilometer. Okay, so what we knew today is core, it's mantle, and this is crust. But now what we see, what we see here, this is rock up to 150 kilometer. You see it's lithosphere. Up to here upper mantle, lower mantle. So in the lower mantle what happens, from here onwards the liquidity starts, means asthenosphere. It's part of upper means I might be wrong here if we draw this. Yeah, like this. It's asthenosphere, and this is like liquid. I know it's overlapping in this this classification, but don't worry, we don't have to deal with that. And asthenosphere, and what happens now, I'll be just letting us introduce to the Sial and the Sima concept. Now first is like on the basis of crust, mantle, core, of solid, and then lithosphere, asthenosphere. But now we'll be describing it as different component physical properties. First one is physical appearance. Now we go to the chemical composition. For example, if we draw like this, it's solid, like up to here it's mantle, it's core. So what I want to say, it's like I draw it like crust, mantle,
and this is core that we see. And now what is happening here is like up to here it's like solid, up to here it's like solid. Okay, so we call it lithosphere. Okay, we call it like solid, then it's lithosphere. And in this only we saw there is semi-liquid. In this we call it semi-solid, and we call it as asthenosphere. And then after here temperature pressure over combined means there is a equilibrium somewhere. The pressurized makes solid, temperature high makes liquid. So basically there is a confusion zone here. So this is crust and now. So basically what happens, whole thing is, this is Cl, up to which, let me just do for you. Cl, the crust part. This is Sima. And this is knife. I already made it clear here. Yeah, see, it's Cl, up to here it's Sima, and it's knife. Means this classification we can say that I can do it here only. Crust is equal to Cl, mantle is equal to Sima, and core is equal to knife. So basically what is happening, it's also here to here, means it's upper mantle, it's lower mantle. Lower mantle is in liquid state, lower mantle more rigid than asthenosphere. But here what happens, it's semi-solid. And this lower mantle is more rigid here, because here temperature overcome, pressure overcome temperature. I say that pressure increases, then solidity increases, means rigidity increases. So this is known as mesosphere. So this is lower mantle, the name given to the lower mantle. And also we come down, then what happens, solidity increases as density increases, as pressure increases. So we have to know that oceanic continent is made from, crust is made from the Sima. How we say that is something that is of great. No, it's like ocean bed are made up from Sima. See, it's a component of crust, mantle. Sima is component of mantle only, that's why it's seen here. So basically what we see here is that we can draw this diagram like it's crust, it's mantle. You see this river here, see this ocean here, this is made up from Sima, sorry Cl, it's made up from Cl, this is from Sima, this is from Sima, and this is from knife. Here 80% iron and 20% nickel. Melting point of all the chemical elements is not same. Oxides are having higher melting point at upper core. Upper state of is temperature, means solid liquid. We will play the game between which is solid, which is not, like this. This is crust. No, not this game. We will draw a semi pi. We will draw pi,
This is crust, this is mantle, this is core, and in this we have to go through this in this. So this is solid and made from Cl. Okay, this is what, this is mantle, and upper mantle, we know that upper mantle is also in the, some part is in the lithosphere and some part in the asthenosphere. And then after, from lower mantle, it's mesosphere, and it's like it is semi liquid, semi solid. This is rigid. Solid, it means solid, and solid, semi solid, solid, where this is liquid and this is solid. Here temperature inner, and in this core we know that it's called barysphere. Okay, so mantle, upper, sema solid, sema if a liquid, yeah, because this is temperature. And also oxides at higher melting point, ऑक्साइड के पास ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. इनर कोर सॉलिड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है, एंड दिस इज लिक्विड. सो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं. वी कैन ड्रॉ हियर लाइक दिस, we can draw here like this. This is our pi dissection. This is crust made from Cl. This is sema. This is Nephe. This is made up from this part lithosphere, this part what, lithosphere, this part asthenosphere, this part mesosphere, this part barysphere, and this is sema-Cl. This is solid, this is semi-solid, this is solid, means it's rigid. Okay, this is liquid, this is solid. Why solid and nothing like that will be seen there. Practical observation, the definition will be other than that. You will be seeing that here. There is also constant trade-off between temperature and pressure. More temperature, more solid, more solid. Liquid, this high temperature and pressure increases both, because temperature and pressure both increases because at the two time. So if temperature high, pressure high, this will push it to be liquid and this will put to be solid. So who wins depend upon the high temperature. If it has a high melting point, then the temperature falls, means pressure wins. Pressure wins means this. But even if it's have a same, then why it won? Is why it's here, because here temperature is high, temperature here high, here high. So in the upper core, oxides have high melting point. So at upper core, where there is a more pressure than mantle, but core begins to have high quantity of which is has low. So Ni and Fe have a low melting point. So when it has a low melting point, then this wins, and this means, you know, this is solid and this is liquid and this is solid. Means why this is like this? Because here melting point of Nephe is low, that's why temperature wins than pressure. So there's liquid, and whenever there is a solid, then you must tell that pressure wins that
temperature, and when there is a liquid, then there is temperature less equal pressure. And for this, what you say, temperature means melting point will be less. That's why temperature won't. It's a conclude, you can conclude this means we can go reverse engineering, like Nife has a low melting point, that's why temperature wins here, and that temperature wins here means even if it is so it is on here and it is here solid and it's liquid. So basically there is trade-off between these things, you know. We did it. So recapitulation, you have to do it very fine recapitulation sheets we used to do in our childhood. So basically, this is crust, this is mantle, this is upper mantle, this is lower mantle, this is upper core, lower core. On the basis of crust, we will be defining it 0 to 34, 2900 kilometers, 6400 kilometer. It is like Sial, it is like Sima, sorry, it's not Sial, Sima, and Nife. I can write it Sial, Sial, what the hell I'm doing? Sial, it's Sima, it's Nife. Here what we see, here it's crossed. This is this is lithosphere, this is asthenosphere, this is mesosphere, this is barysphere, outer barysphere, inner barysphere, this is mesosphere, asthenosphere, lithosphere. Here it's Cial, Sima, sorry, it's Sima, Cial, Cial, Sima, Sima, Nife, Nife, ये सेम है, सेम है, ठीक है. So on this division, Cial, Sima, this is solid, this is semi solid, this is solid, this is liquid, this is solid. So lower mantle, upper mantle, this is done, crossed 34. Then after this, it starts from this up to this up to this 0 degree 0 kilometer. This is about 34 not 150 kilometer, and this is up to outer how much. There's no any mention. Yeah, but important element that we see here in this diagram is like something most importantly that we can see here. So this is what we see here is the important elements of in the earth that we find here. It's a whole earth about iron, oxygen, silicon, magnesium, nickel. Earth crust means all whole earth means on earth, whole earth, and on the earth crust means for this whole earth, and for the crust part only we have the different, like in the earth crust there is first is oxygen, and this iron means iron is the first one in the whole earth. The second one is iron, then it's oxygen means no, silica, oxygen and silica is the first one, second in the earth crust. So volume of mantle that we saw here, this volume of mantle, you see this volume of mantle is more than that, everyone is 84%, this is about 14% core, and this is about only 2%. So this is also to be most importantly remember by you to just estimate the difference between the volume covered inside the earth. So here earth interior and evidences zone. So basically the shadow zone means interior of the earth, how we got to find the evidence that where it's solid, where it's liquid, rigid, semi solid, and liquid. So basically we did it with the help of seismology, that is the study of earthquakes. We will find that the earthquakes for now is in the pursuit of evidence of earth interior, like vibrations, energy, how, where, and why, like lithosphere, asthenosphere. So always the vibrations and energy, how will, where, and how the earthquake is in always in the lithosphere, and it's started movement means basically it start from the asthenosphere. Asthenosphere is like the liquid over which the lithosphere like a boat floats. Okay, so when energy and vibration comes from the asthenosphere in form of waves, and that's wave is known as seismic wave that we see here. That's lithosphere, this is asthenosphere, here it's cross about 150 kilometers, about 200 kilometers up to here. Then there is asthenosphere, which is a liquid like this. This is a lithosphere, which is there's a lithosphere which is floating on this asthenosphere, and then we feel that we saw that the energy from for the earthquake that occur comes from the asthenosphere, and this asthenosphere energy will be propagated inside this, and whatever we find here is the something that like epicenter will be finding here is the perpendicular up
upward from this position where the epicenter is there. So basically focus is on the hypercenter, and epicenter, focus, high center, this focus, this is a focus. Epicenter is some beyond this, beyond means here it's epicenter, it's epicenter, 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 it's epicenter, origin point of the earthquake. This is origin point, this is known as focus, focus or high center. This is not a talk, this is not a talk of our present day, because this is something inside the origin point, means rock displaces lithosphere. So this is something like first attack, means this is not like that, means here एनर्जी वाइब्रेशन एस्थेनोस्फेयर से आता है, बट जो फोकस होता है वो आपको लिथोस्फेयर में ही होता है। लिथोस्फेयर यहाँ पे हो गया, मतलब ये सब गलत है, ये लिथोस्फेयर में ही रॉक हिलेगा। एनर्जी टू अर्थ क्वैक विल कम फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर। रॉक डिस्प्लेसेस जो होगा वो होगा आपको लिथोस्फेयर में, उसको बोलेंगे हाई सेंटर, उसको बोलेंगे फोकस, और ये ऊपर जाएगा लिथोस्फेयर में, अपर क्रस्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे एपीसेंटर। वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दुनिया के लिए। सो अर्थक्वेक ऑन द वाइब्रेशन द क्रस्ट कैन फॉर्म थ्रू द मैनमेड रीजन्स, डैम, रिजर्वायर्स, तो और भी तरह से हो सकता है, रिजर्वायर, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, तो वहाँ से भी हो सकता है। सिस्मिक वेव जो होता है, फोकस से सिस्मिक वेव जाता है, जैसे यहाँ से ही सिस्मिक वेव जाता है, सिस्मिक वेव फोकस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स ये है। तो सिस्मिक वेव फोकस से होता है, फोकस से सिस्मिक वेव जाता है एपीसेंटर में। तो यहाँ सिस्मिक वेव जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बॉडी वेव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉडी वेव होता है, आपको सरफेस वेव होता है। बॉडी वेव लाइक इज इनसाइड द अर्थ, एंड सरफेस इसके अंदर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इसमें सरफेस पे होता है। तो बॉडी वेव आपको 2 टाइप का होता है, पी वेव, एस वेव, ये सब कैसे पता था, कहाँ पता था आपको, नहीं पता था। प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव इज समथिंग लाइक प्रेशर वेव, ऐसे ऐसे जाता है, डिंग 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 डिंग। सेकेंडरी वेव इज लाइक ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स नहीं बोलेंगे, फिर लाइक साउंड एक्सपेंशन कंप्रेशन। सेकेंडरी वेव इज लाइक वाटर रिपल, ठीक है। तो ऐसा समझो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी वेव ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा एक बार थ्योरी ले लो। पी वेव जो है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्पीड मोर देन एस वेव, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, इसका स्पीड कम होता है, ठीक है। पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी वेव, स्पीड लो लेस देन 8 से 9 किलोमीटर। Seismograph is used to detect seismic happens on Earth, but it is most common point its intensity is high. When seismic wave travels through different medium 1 with the speed of seismic wave is high there, and the seismic waves are high there to a different medium. So we see that when seismic waves travels through different medium, in medium case 1 solid to liquid, yeah. You see this. So when there is a solid to liquid transition, you see that denser to rarer. The speed of longitudinal waves uh, increases. Longitudinal wave increases, means p waves का speed increase हो जाता है, and s wave का कम हो जाता है, सेकेंडरी वेव। लिक्विड टू रेयर जाएगा तो अपोजिट होगा, हाँ ये तो पता ही है। उसमें अगर आप करोगे तो सॉलिड टू लिक्विड जाओगे तो कम होगा, उसको सॉलिड चाहिए, उसको लिक्विड नहीं चाहिए, इसको इतना गैस चाहिए, सही वो तो पता नहीं था। ये वेव यार हवा वाला, डेंसिटी इज मैक्स, डेंसिटी मीडियम ज़्यादा, स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव ज़्यादा होगा, वाइस वर्सा। सिस्मिक वेव जो है इट्स नॉट लाइक सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी ऐसा समझिए कि सेकेंडरी वेव पी वेव मिला के, मतलब सेकेंडरी वेव मतलब ये ऐसा समझिए कि सिस्मिक वेव जो है वो बढ़ जाएगा, सिस्मिक वेव जो है वो बढ़ जाएगा। सिस्मिक वेव में एस का प्रॉपर्टी होता है, मतलब सेकेंडरी, मतलब उसको सॉलिड चाहिए, मतलब जब रेयरर टू डेंसर जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड
फास्ट पी वेव, फोकस से यहाँ जाएगा तो पी वेव फास्ट है, एस वेव स्लो है, रिच एपिसेंटर, एस वेव रिच। सो यहाँ पे स्पीड मैक्स एंड सॉलिड, हाँ पता है मैक्स एंड सॉलिड ऑफ कोर्स। सो पी वेव जो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन पे काम करता है, कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से जाएगा ऑफ कोर्स। एस वेव जो है ओनली थ्रू द सॉलिड, ये तो बात पता ही तुमको। देखो जो भी तुमको यहाँ पे एपिसेंटर है, यहाँ पे जाएगा, ये जो जाएगा यहाँ पर तुमको सिस्मिक वेव दो टाइप में जाएगा, या तो पी से जाएगा या तो एस में जाएगा। पी पहले जाएगा, पी की स्पीड ज़्यादा इसका कम है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सबसे जाएगा, ये कल सॉलिड से जाएगा। इसका स्पीड जो है दोनों का मिलाकर, मतलब जो सिस्मिक वेव है इसका स्पीड बढ़ जाता है जब आपको सॉलिड चीज़ रहता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड कम हो जाता है जब आपको डेंसिटी कम रहता है, सॉलिड कम रहता है, मतलब लिक्विड के केस में बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। सो लिक्विड ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा ऑफकोर्स लिक्विड पर। कैन ओनली ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। सो ड्यू टू सिस्मिक वेव बेंड, सो यहाँ पे जब पता करते हैं ना रिफ्रैक्शन से क्या होता है, बेंड हो रहा है, तो पता चल रहा है कैसे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे हो जा रहा है, तो पता चल रहा है देयर इज़ अ कांस्टेंट डिफरेंस इन दी मीडियम। सो भूकंप के मल्टीपल झटके के कारण पहला पी वेव, दूसरा पहुँचता है एस वेव। सो जैसे पी वेव यहाँ आया, तो पी वेव यहाँ आया, ठीक है, पी वेव यहाँ है तो एस वेव यहाँ नहीं आता है, वो सॉलिड में जाता है। तो कांट ट्रैवल वाटर सरफेस वेव मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर डिस्ट्रक्टिव कॉल्ड एल वेव्स, लव वेव्स, रेलिक वेव्स। बॉडी वेव्स जो होता है पी एस वेव, सरफेस वेव, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। सो बॉडी वेव्स दो टाइप के होते हैं, आपको बताते हैं। बॉडी वेव दो टाइप के होते हैं, एस वेव, पी वेव एंड एस वेव। ये जो होते हैं लव वेव एंड रेलिक वेव, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं या कम होते हैं, ठीक है। सरफेस वेव कहाँ से आई, बॉडी वेव से ही आई। जब बॉडी वेव सरफेस पर टकराता है देन न्यू वेव फॉर्म, दैट्स सरफेस वेव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर डिस्ट्रक्शन। एल वेव भी बहुत खतरनाक होता है, देर से 3 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है। ये ऐसे ऐसे होता है, ये तो ऐसे ऐसे होने लगता है, मतलब ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये सर्कुलर रोटेशन करने लगता है मुझे, ठीक है। मोर डिस्ट्रक्टिव दैन एल वेव, अब इसमें भी ये एल वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये रेलिक वेव। स्पीड सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, सबसे ज़्यादा पी का होता है, फिर एस का होता है, फिर एल का होता है और एस का साथ होता है। एल आर का सेम होता है लेकिन डिस्ट्रक्शन आर का सबसे ज़्यादा, और डिस्ट्रक्शन आर का, फिर एल का, देन पी का, देन एस का। सॉरी, डिस्ट्रक्शन एस का ज़्यादा होता है, अगर टकराया तो एस का ज़्यादा होता है पी से, ठीक है। लेकिन वो आता नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, मतलब वो केवल ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में, ये तो बॉडी पे ही, मतलब ये तो केवल ऑफ कोर्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाएगा, ये मतलब सब बॉडी वेव में ये सी पी पी भी इसमें तीनों में जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाएगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाएगा। समरी जो है, समरी पी वेव ट्रैवल इन सॉलिड, समरी इन सॉलिड वेव, पी वेव ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड गैस, P wave travels through the solid liquid gas and S wave travels through the solid only. Reflections occurs in the change in the medium. Speed in solid greater than U. Speed waves can travel through only. Surface waves can travel through only. जो surface wave होता है, surface wave can pass through solid more intensely and लिक्विड लेस इंटेंसली। सॉलिड लिक्विड दोनों से जा सकता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा जाएगा एंड लिक्विड से कम जाएगा, मतलब ये भी सिस्मिक वेव की तरह ही होता है। सिस्मिक वेव में तो एकदम एस वेव नहीं जाता है, इसमें जाता है दोनों में जाता है, मतलब मिला के कनेक्टिंग द डॉट्स टू फाइंड द एविडेंसेस इन द अर्थ इंटीरियर, दैट सिस्मोग्राफ यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। वी नेवर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व द स्ट्रेट ट्रैवलिंग पाथ ड्यू टू दिस इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज डिफरेंट मीडियम। यहाँ से ये पता चल गया कि हमें कभी यहाँ पे रखा, यहाँ पे है, यहाँ 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 कभी नहीं मिला, हमें यहाँ मिला, हमें यहाँ मिला, चलो यहाँ तो मिल गया, हमें यहाँ मिला, हमें यहाँ मिला, तो वो हमें वहाँ नहीं मिलता। सो देर इज नो एनी स्ट्रेट लाइन, दिस मीन्स दैट देर इज अ डिफ्लेक्शन चेंज इन डेंसिटी। सो एस वेव के साथ दूसरा, मतलब ये सिस्मोग्राफ कभी हम लोग रखते हैं तो वो हमें सामने नहीं मिलता है, मतलब वेव डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, एस वेव का शैडो बनता है। एस वेव शैडो क्या होता है, देखिए क्या होता है कि एस वेव बॉडी वेव है, तो यहाँ से जब बॉडी ऐसे जाता है तो एस वेव आता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जब एस वेव है ये सॉलिड में जाता है, कोर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, कोर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज ऊपर वाला पार्ट, दिस इज नीचे वाला पार्ट, दिस इज ऊपर वाला पार्ट, दिस इज नीचे वाला पार्ट, दिस इज सॉलिड पार्ट, दिस इज सेमी सॉलिड पार्ट। सो यहाँ जो आपको है ना ये वाला चीज़ लिक्विड वाला, ये चीज़ इसको आने नहीं देता है, तो
बेसिकली यहाँ तक ही आ पाता है, क्योंकि यहाँ चलो ठीक है सेमी सॉलिड आ गया, तो ये जो जोन है ना, दिस जोन ये आपको इस वेव शैडो जोन हो गया, ठीक है, इस वेव शैडो जोन हो गया। सो यहाँ पे कभी नहीं होता एंड ये चीज़ हमें देखा हुआ है 103 डिग्री इधर, 103 डिग्री इधर। ये क्या हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी है, यहाँ से हम लोग ऐसे देखते हैं एंगल लगेगा, तो ये लिक्विड तो we never observe vibration is sweat, sometimes you must have a stopping something this set is fact that outer wave is hence क्योंकि यहाँ पे इस वेव जो है आपको सॉलिड में नहीं जा सकते, ये आप याद रख लीजिए, इस वेव प्रोपगेटिंग गिव्स प्रूफ दैट आउटर कोर इज लिक्विड। सो पी वेव शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन क्या है, पी वेव क्या है, पी वेव कहीं भी जा सकता है, पी वेव कहीं भी जा सकता है। सो बेसिकली ऐसा क्या है ना कि ऐसे है, सो ऐसे है, मेंटल है, कोर है दो, ठीक है। सो मेंटल में भी ऐसे है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे पी वेव यहाँ से जाता है तो यहाँ सॉलिड सॉलिड अब ऐसे हो जाता है, ऐसे है, सॉलिड 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 सॉलिड, लिक्विड है, लिक्विड आया तो ऐसे हो गया, स्पीड कम हो गया, ठीक। तो बेसिकली ये जो है इलाका, तो ये जो जोन है सिमिलरली ऐसे है, ये जो जोन है ये पी शैडो जोन है, पी शैडो जोन, ठीक है। Also it was found that the speed of P waves in the core is max more rigid, जितना P सॉलिड जितना ज़्यादा, लिक्विड फिर गैस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया ना एंगल ज़्यादा टर्न गया, इसलिए तो मतलब ठीक है, समझ रहे ना, इनर कोर में सबसे ज़्यादा। तो इनर कोर में भी एक बात पता चल गया, पी वेव शैडो जोन से ये पता चला कि यहाँ टेम्परेचर है, और यहाँ पे ये पता चल गया कि इनर कोर जो है वो मैक्सिमम है, मतलब वो सॉलिड है, ये पता चल गया वो सॉलिड है, पहला बात। तो पहला चीज़ क्या पता चला कि मीडियम डिफरेंस, तो पहला चीज़ है मीडियम डिफरेंस, मीडियम डिफरेंस दैट वी फाउंड। दूसरा इस शैडो जोन से क्या पता चला, इस शैडो जोन से ये पता चला देर इज़ आउटर कोर जो है वो आपको लिक्विड है। तीसरा पी वेव से ये पता चला, उसमें स्पीड देखा गया, तो वो पता चला कि आपका जो इनर कोर है वो सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। सो यहाँ पे आई नो देर इज डिफिकल्ट टू complete cover this, but what we can do, discontinuities in the earth structure, पुनः डिसकंटिन्यूटी, ये होता है मोहो रोमिक, ये अभी छोड़ देते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ के लिए। सो लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग आते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेरी स्लो प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि theories to understand the plate tectonics theory. So basically plate tectonic theory को, sea floor spreading theory को, conventional current theory को, क्या कैसे हो रहा है नहीं पता, तो हमें देखते हैं। तो इन जियोग्राफी स्ट्रीम ड्रिफ्ट जो होता है वेरी स्लो, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताता है हमें, क्या बता रहा है, उन्होंने फॉसिल को देखा अंटार्कटिका में, फॉसिल मिला, कहा होगा लोकेशन सर्वाइवल कंप्लीट, अंटार्कटिका मस्ट बी देयर दैट टाइम, तो अंटार्कटिका जो है वहाँ रहा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे यहाँ पे पता है तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताकर हमें पता चला कि 225 मिलियन ईयर से सुपर कंटिनेंट फैलते रहा होगा, सुपर ओशियन जिसको लोग खुलासा बोलेंगे इंडिया में जर्मन और now magma inside the asteroid experiment have different types of motion, divergence, divergence हो सकता है, तो if the crack should be the reason here, body will occupy, water body will occupy, यहाँ फट गया, यहाँ पर आ गया, तो पैंथल आसा जो है, पैंथल आसा जो आपको वो तरीका का
आंसर आता है लॉकोस एंड फ्लोरेंस 2 + एशिया। और लॉरेशिया में गोंडवाना लगा, 33 का 33 गोंडवाना में तीसरा सेटिंग। तो देखिए उन्होंने कितना ऐसे पढ़ इसमें हम क्या पढ़ें, हमें क्या भी करना है। मैं यहाँ पर अभी सब हम लोग देखे आपका अलग देखिए हम लोग क्या है ये बहुत आगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अपनी कॉन्टिनेंटल थ्योरी एक्सप्लेन करें। कॉन्टिनेंटल थ्योरी में क्या बता सका कैल्कुलेट एजेंसी के बारे में ऐसी चीज है तो मतलब हम खिला सकता रंजिया था ऐसे करके। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि एविडेंसेस क्या है कि ऐसे क्या होगा। उन्होंने स्टार्ट किया था अंटार्कटिका से, वहाँ पे जिक्सा पजल पहला चीज था, वो जिक्सा पजल था। जिक्सा पजल था उसमें ये देखा गया कि ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका एकदम फिट कर रहा था। एंड सिमिलर टाइप रॉक यहाँ पे जो रॉक है यहाँ पे सेम रॉक फाइंड आउट हुआ, यहाँ पे जो रॉक था वहाँ पे भी फाइंड आउट हुआ। एंड सेम एज का भी था, सिमिलर टाइप के रॉक थे। ठीक है, तो सिमिलर रॉक ये पता चला किसका 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 पजल ये सेम टाइप सिमिलर रॉक टाइप से फॉर द कॉन्टिनेंट। एंड ऐसा हुआ था कि कॉन्टिनेंट में भी सेम टाइप के रॉक थे। लाइक जो हमारा साउथ अमेरिका है और इंग्लैंड वाला है वो वाला भी सब सेम लग रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा था, जैसे कि टिलाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपोजिट ऑफ प्ले आई गेस ग्लेशियर्स। तो ऐसा पता चला था कि ये है अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पता चला कि ऐसे करके ऐसा पता चला कैसे करके वो सेम है सेम है इसके। तो पता चला कि कभी कभी आइस यहाँ पे जो लाइट है ना, लाइट डिपोजिट सेम इम्पोर्टेंट है। लाइट डिपोजिट आपको काम आया है क्या, डिपोजिट ऑफ क्ले बाय ग्लेशियर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉरस यहाँ पे क्या है कि मेसोसॉरस स्मॉल रेप्टाइल दैट लिव्स ओवर कितना, तो फॉसिल फ्यूल या फाउंड इन द कोस्ट साइड ऑफ द अटलांटिक different continents of similar type के पैटर्न में ओवरलैपिंग पैटर्न ओवर तो यहाँ पे 4-5 चीजें थे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जैसे सेम रिसोर्सेज रॉक resources जैसे लाइक रॉक इजी फॉर ड्रिफ्ट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला टाइडल फोर्स रहा होगा या फिर अकॉर्डिंग टू टाइडल फोर्स रहा होगा या फिर फोर्स प्लेन फोर्स, मतलब वो जो ऐसे घूम रहा है ये तो नदी एक ऐसे ऐसे फोर्स है वो उसके कारण ऐसे हुआ होगा। तो ड्राबैक जो था इसका ये था टू दिस कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी जो था ड्रॉबैक टू दिस कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी दैट वाज द रीजन। तो रीजन था can't exclude any current from living agent रीजन अच्छा नहीं था म्यूचुअल करंट जो था वो आया म्यूचुअल करंट जो है एक्चुअल रीजन क्या था, म्यूचुअल करंट का बात है स्टेट टू बी डिस्कवर्ड। म्यूचुअल करंट क्या होता है लाइक वेरी ऐसे क्लियरली में रहता है तो थ्योरी सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल थ्योरी स्टैंडर्ड बाय आर्थर क्लैम्स। तो 1912 में जो आर्थर वो वेगना के द्वारा स्टैंडर्ड हुआ था वो 1930 में आपको आर्थर वेग ने होम्स ने फाइंड आउट किया। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करेक्ट। पहला बताइए, पहला क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद जो इसको हमने उन्होंने क्या बोला, टाइडल फोर्स था, उन्होंने बोला कि फोर्स पोल्स फ्लिंग फोर्स था, तो ऐसा गलत था वो। तो इसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग को 1930 में आर्थर होम्स आए, ठीक है, आर्थर होम्स आए एंड इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहा, ऐसा यहाँ पर कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट है, कन्वेंशनल कंसेप्ट करंट का कंसेप्ट है। यहाँ पे ये बताएं कि ऐसे है कि अंदर ऐसे ऐसे मेंटल में या फिर लिक्विड एस्थेनोस्फीयर में, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल मेंटल दिस करंट्स आर जनरली ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो हीट है, जो करंट है जनरेट हो रहा है वो द थर्मल डिफरेंसेस इन द मेटल, तो चूँकि थर्मल हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आए। सो सी फ्लोरिंग फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि वो देखिए, तो ऑरिजिन ऑफ थ्योरी क्या है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो जैसे ही ये टूट टूट के अलग हो रहा था तो उसके बीच का जो भी मैग्मा था वो कहाँ से आ रहा था, मेंटल से आ रहा था। तो मेंटल से जो मैग्मा आ रहा था वो मैग्मा में क्या था, सीमा था, और सीमा था। सो व्हेन दे वेर अपार्ट नाउ द वाटर कम इन बिटवीन एंड दिस क्वेश्चन अबाउट दिस रॉक, आई मीन देयर इज टू टाइप्स ऑफ जिक्सा पजल दैट
when these two part of jigsaw puzzle get fit apart, then get apart, get apart, then rock came in between, and from lava which flows from volcano, which flows from volcano. It's being two different parts. It's being two parts apart related to volcano. Yes, of course, this maybe have happened because only after volcano lava flows, land breaks, ocean will come and spread in between. So basically जब ये दोनों अलग हुए, so basically अलग हुए तो अंदर से तरह का सीप स्प्रेड हुआ. सो जैसे ऐसे था, ये यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा था, इधर कन्वेंशनल अदर इधर ऑपरेट कर रहा था, एंड जैसे कि ये हुआ तो यहाँ पे मैग्मा कम जैसे जैसे कंटिन्यू दूर जा रहा था इंटरनल कन्वेंशनल फ्लो के साथ, जैसे जैसे मैग्मा बाहर आ रहा था सी फ्लोर बनता जा रहा था. ठीक है. सो बेसिकली सी फ्लोर टेक्निक इज समथिंग लाइक विच कैन एक्सप्लेन दी ब्रेकिंग डाउन. तो ऐसा हो रहा था कि अपलिफ्टिंग हो रहा था, ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये टूट रहा था. ऐसे आप इसमें फील कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा था, मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जा रहा था, इधर ऐसे ऐसे जा रहा था. ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा था, इधर इधर ऐसे जा रहा था. ठीक है, यू कैन सी दिस. तो यहाँ पे जैसे टूटा कन्वर्टर क्रैक्स डेवलप ड्यू टू द इंटरनल कन्वेंशनल फोर्स से ये मैग्मा को ऐसे एस्टोस्फीयर में किया, कन्वर्जन डाइवर्जेंस हो रहा था यहाँ पे. तो जैसे हुआ तो यहाँ पे फटा, न्यूली फॉर्म रिफ्ट वैली रिज बन गया. तो जैसे ही ये निकला यहाँ से ये फटा, जैसे ये सी फ्लोर है यहाँ पे टूटा, तो हम नीचे वाला बस बता रहे हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये जो फूटा यहाँ से निकला, जैसे फूटते गया निकलते गया. तो ये जो ओशन बेस बन रहा था, ये नया था, न्यू ओशन बेस, मिड ओशनिक रीजेस. ये वही रीजेस है जो कि आपको मिड ओशनिक रीजेस जो आपको एक बहुत बड़ा देखने को मिलता है आपको पैसिफिक ओशन में. मिड ओशनिक रीजेस है, मोर्स बोलते हैं इसको. सो यहाँ से क्या हुआ कि ये नया है, तो ये कैसे बना ये सब भी देखेंगे हम लोग. कैसे पता चला कि ये आया है नहीं आया, वो सब देखेंगे. तो सी डी ए डी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जैसे निकला ओशन बेसिन कंटिन्यू मिड ओशन. सो कंक्लूजन क्या है, इट मीन्स दैट द पैंथालासा एग्जिस्टेड ऑन द लैंड. पैंथालासा जो था एग्जिस्टेड ऑन द लैंड सपोर्ट. पैंथालासा जो था वो एग्जिस्टेड ऑन द लैंड सपोर्ट विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग. पैंथालासा था जो वो लैंड पे ही था. पैंथालासा जो सुपर ओशन था वो एग्जिस्टेड लैंड सपोर्ट पे था विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग. एज विद द टाइम पासिस कंटिन्यूड ब्रेक डाउन, एज ऑफ टुडे वी कैन ऑब्जर्व मोर्स बिटवीन द डिफरेंट टू कॉन्टिनेंट. तो हम लोग को ये मोर्स दिखेगा ही टू डिफरेंट जो दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के बीच हम लोग को ये मोर्स दिखता है. ठीक है, मोर्स दिखता है कॉन्टिनेंट ऑब्जर्व बाय हेनरी फेस. ठीक है. कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज़ वेरी ओल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओशन करंट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है बहुत बहुत ओल्ड है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ओल्ड है ओशन से. ओशन क्रस्ट फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा coming out of the asthenosphere. Asthenosphere is a part of the mantle, whole mantle made up of the seam which is in silicon magnesium. Hence this cement is a ocean. बस ये कन्वर्ट को करेक्ट. फॉल्ट रिफ्ट बना, मैग्मा आउटफ्लो हुआ, लावा कूल हुआ, ओशन क्रस्ट बन गया. लेक फॉर्मेशन, रिवर फॉर्मेशन, न्यू फॉर्म नेशनल ओशन, न्यू ओशन. तो ऐसे मोड्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. रॉक्स आर द टेप रिकॉर्डर ऑफ द अर्थ. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन क्रस्ट will somewhere lead to the decrease equal amount of crust in order to the. अब ये होगा ना कि अब जैसे जैसे उधर बन रहा था,
बनने के बाद हम देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। एटमॉस्फेयर के पहले हम करेंगे जितना एकदम पता चला जो भी हमारा मिड ओशन क्रूजेस था वो ऐसे टूटता गया और बढ़ता गया, ओशन को राइज दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग टेक्निक। लेकिन यहाँ के बाद हम लोग फिर जो भी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट विल बी फिर लीड टू वो एविडेंस ऑफ सपोर्ट दिस थ्योरी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए फाउंडिंग ऑफ मोर्स मिलता है। वो रॉक एज विल बी लेस एट रिजेस एंड वो भी होता है पैलियो मैग्नीज्म। तो पुराना जो है पैलियो मतलब पुराना मैग्नेटिज्म। तो ये जो है सिमिलर ऑरन रोड ये होता है। तो मैग्नेटिक पोल ये अपना पोल भी चेंज करता है, शिफ्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके। मैग्नेटिक पोल ऐसे होता है तो एक करंट बहता है तो उसका नॉर्थ पोल मतलब करंट बहता है तो उसका नॉर्थ एंड पोल इस्टेब्लिश होता है। सो यहाँ पे ऐसे करंट बहता है तो नॉर्थ एंड पोल होता है। सो जियोग्राफिकल नॉर्थ जो है वो अलग है और मैग्नेटिक नॉर्थ अलग है। सो यहाँ से जो निकल रहा है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो आउटर कोर है लिक्विड है सही है ठीक है। सो नाउ ड्यू टू द हाई प्रेशर समटाइम वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वर्जन पोल इंटरचेंज। जैसे पोल इंटरचेंज हुआ, जैसे ही पोल इंटरचेंज होता है आपको डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब फैक्ट दैट देयर हैज़ बीन 170 रिवर्सल्स इन लास्ट 76 मिलियन ईयर्स। द अर्थ प्रेजेंट ओरिएंटेशन फॉर अबाउट 60,000। अभी का जो है 60 साल का है। सो अभी हम लोग को जो दिख रहा है कि साउथ है ऊपर, नॉर्थ नीचे है, ये आपको कुछ दिन में फिर लाइन हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स 2020 का है, 2020 का साउथ मैग्नेटिक फोर्स शिफ्टेड टू कनाडा टू यूरोपियन रीजन। ठीक है, Canada to European region. Now when lava come out as in the liquid state, the ferrous liquid along with the direction of magnetic, तो ऐसे हो जाता है कंसिडर। तो ऐसे 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 ऐसे। सो बहुत सारे ये पैलियो मैग्नेटिज्म देखा गया। फिर रिकैपिचुलेशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, सपोर्टिंग थ्योरी था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सपोर्ट किया कन्वेंशनल थ्योरी, और उसको जो सपोर्ट किया उसको सी फ्लोर को मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी किया। फिर ये सब मिल के अब तुमको प्लेट टेक्टोनिक बताएगा। प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। बेसिकली नेक्स्ट थ्योरी इज ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट में तो स्लैब है, स्लैब की तरह मतलब ये प्लेट है, ये प्लेट है। प्लेट क्या है? टूटा हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट स्लो मूवमेंट हो रहा है। मतलब टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स जहाँ जहाँ लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर हाँ, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट रिलेटिव मोशन, हाँ ठीक है ऐसे समझ गए। ओशियन जाएगा, तीनों का सब सिक्स पॉसिबिलिटी पढ़ना। कन्वर्जन लीड टू द डिस्ट्रक्शन कंपनसेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एरिया। सो कन्वर्जन लीड टू डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लीड्स टू कन्वर्जन, कन्वर्जेंस हो रहा है ना, कन्वर्जेंस तो डिस्ट्रक्शन होगा। डाइवर्जेंस हो रहा है मतलब कोई नया चीज़ बन रहा है। कन्वर्जेंस मतलब कुछ बर्बाद हो रहा है। लीड्स टू कंस्ट्रक्शन न्यूली फॉर्म्ड फिजियोग्राफिक पैटर्न। तो कन्वर्जेंस अभी देखेंगे, मतलब हम लोग बर्बादी देखेंगे। बर्बादी मतलब कैसे होता है देखिए। तो हाँ मतलब डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। कन्वर्जेंस जो है यहाँ पर ओशन का कंटिनेंट, ओशन का कंटिनेंट का, जो ओशन कंटिनेंट है यहाँ जाता है। तो जैसे कंटिनेंट का इसमें जाता है सो आपको क्या होता है ना कि ओशन मेड ऑफ हेवियर मेटल होता है, सियाल, तो डिप डाउन होता है। ठीक है, सो डिप डाउन होता है एंड सेडिमेंट ड्यू टू द रिवर विच जियोसाइक्लिन होता है, जियोसिंक्लाइन होता है। कंटिनेंटल क्रस्ट होता है हायर विथ रिस्पेक्ट टू द ओशन क्रस्ट मूव अप। सो क्या होता है कि कंटिनेंटल क्रस्ट है हायर तो मूव अप, तो डिप डाउन तो सेडिमेंट पर प्रेशर पड़ता है। सो बिगिन टू राइज, बिकम फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जैसे फोल्ड माउंटेन बना, फिर यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में देखते हैं जो कंटिनेंट है वहीं पे है एकदम, वहीं पे है एकदम प्लेट। ठीक है, तो कन्वर्जेंस बिटवीन ओशन और ये, तो यहाँ पे आपको अंडस माउंटेन का रेंज दिखेगा, फोल्ड माउंटेन। एज यू सी दैट यहाँ पे जो ओशन कंटिनेंट का कन्वर्जेंस है उससे बनता है फोल्ड माउंटेन। एज ओशन क्रस्ट स्लाइड्स डाउन देन इट गोस टू द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में ओशन का गया, देन मेल्ट एंड ब्रेक्स प्रेशर इंक्रीज हुआ, लावा प्रेशर बनाएगा मशीन इन द यहाँ से यार वोल्केनो सीन होता है। हेंस मॉर्स जो है डाइवर्जेंस करता है, तो कोल्ड माउंटेन्स कन्वर्जन से बनता है। मोर्स डाइवर्जेंस से बन रहा है, ये कन्वर्जन से बन रहा है। कन्वर्जन से कैसे बन रहा है? ट्रेंचेस डीप ये है, ये अंदर गया, यहाँ स्प्रेडिंग जो यहाँ स्प्रेडिंग हुआ, मतलब ये पक्का इधर कहीं बन रहा होगा। सो यहाँ हुआ कि ये हुआ कि
कभी ना कभी तो बना होगा। हाँ ठीक है, ये भी तो मान कर आना, कभी कभी ना कभी तो बना होगा। पुराना वाला है वो, नया वाला, पुराना वाला है कि नया वाला है? उधर कोई नहीं है, नया वाला है। धक्का लग रहा है तो क्या करेगा भाई, धक्का लगे तो इधर आ जा रहा है। ट्रेंचेस जो है डीप डाउन, ट्रेंचेस यहाँ बनता है ट्रेंच। मतलब ट्रेंच जो होता है हमेशा सबडक्शन जोन के पास होता है, स्प्रेडिंग जोन सबडक्शन जोन। एग्जाम्पल ये देखिए, जब आपका ओशियन जो है, ओशियन और लैंड के बीच में होता है, जापान के पास ओशियन और लैंड के बीच में, जापान के पास, ठीक है। और ओशियन, ओशियन बनता है, ओशियन ओशियन कॉन्टिनेंट जो होता है, कोल्ड माउंटेन बनता है, वोल्केनोज बनता है, ट्रेंचेस बनता है, अर्थक्वेक बनता है। तीन चार चीज़ देखिए, कोल्ड माउंटेन्स में, कोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनोज, ठीक है, इधर बन गया वोल्केनोज, सबडक्शन जोन, इधर वोल्केनो हो गया, ट्रेंचेस, ट्रेंच बन गया, अर्थक्वेक। मतलब चार चीज़ बना है कन्वर्जेंस में, समझ रहे हैं? कन्वर्जेंस में चार चीज़ बना है, ठीक है बेटा, वो कन्वर्जेंस, ठीक है। वो कन्वर्जेंस में क्या है, आपको ओशन, ओशन टकराया, हेवियर ऑफ द ओशन गेट्स डाउन, नो सेडिमेंट, नो सेडिमेंट है तो ऐसा कोई फॉल्ट माउंटेन बनेगा नहीं। वोल्केनो प्रेशर इज हाई माउंटेन सीज में, हाई प्रेशर ड्यू टू फिर टाइम आइलैंड फ्रॉम ऑन द सरफेस आइलैंड, ऐसे होगा। सो ये होगा कि ऐसे फुटते फुटते ट्रेंस, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग जोन, सबडक्शन प्लेट, प्लेट, अपोजिट साइड में आइलैंड ऑन दिस प्लेट। ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, ड्यूरिंग डाइवर्जेंस क्या हुआ, ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, तो यहाँ पे वोल्केनो अलग टाइप से, लावा कम्स ऑन फ्रॉम द रिजेस, नो चांस ऑफ आइलैंड। उस वक्त आइलैंड का चांस नहीं था, लो लो वोल्केनिक प्रेशर थे। ड्यूरिंग कन्वर्जन सेंट्रली इरप्टेड आइलैंड, कोनिक वोल्केनो होता है। तो ड्यूरिंग डाइवर्जेंस जो है, मोर इलोंगेटेड पाथ, फिजर इरप्शन, एक्सटेंसिव फ्लो ऑफ लावा, नॉट मोर डेंजरस, वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। सोन बाई मोर्स, हाँ सोन बाई मोर्स, सो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। लेस डेप्थ फोकस, conical, more dangerous, more height, whether it be OO कन्वर्जेंस और OC कन्वर्जेंस, हाँ हाँ OO और OC, लैंड वाला अंदर जाएगा ना भाई, ओशन में फूटेगा, ठीक है। फ्रेंच फॉर्मेशन कन्वर्जेंस में in path of volcano conic pressure hence more height due to more pressure, so these central conical volcanoes in O called island and in OC called island mountain। वो जो है, दोनों में वोल्केनो बनता है भाई, दोनों में वोल्केनो बनता है। ओशियन वाला डूबेगा नीचे तो इसमें वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, इसमें वोल्केनिक आइलैंड बोलेंगे, वाह, कोनिकल वोल्केनोस, आइलैंड हो गया, वो आइलैंड बन गया, आपको वोल्केनिक माउंटेन बनेगा, वाह। इंडोनेशिया के आइलैंड ओ ओ के हैं, ओ ओ के हैं, तो वो आइलैंड हो गया, हाँ, पैसिफिक ओशन वोल्केनो, वोल्केनिक आइलैंड, कोल्ड माउंटेन्स, वाह, कन्वर्जेंस जोन ऑफ, वाह बहन, विंग ऑफ फायर, यहाँ पे जो भी है सब अंदर गया होगा, सबडक्शन, तो वहाँ पे हर जगह अंदर घुस गया होगा, सब जगह वोल्केनो बहन का भाई। एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन सर्कल, पैसिफिक बेल्ट, एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्या ही कर सकते हैं हम, बताओ। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर बन के सीओ, सीओ जोन है भाई, रिंग ऑफ फायर, वोल्केनो उस पे है ना, वोल्केनो लैंड पे, उसी 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 कन्वर्जेंस, इसी कन्वर्जेंस क्या कंटिन्यू कंटिन्यू होगी, coming under pressure later and this is the reason why subduction CC can vary circulation in the melting, so no high pressure in magma means no volcano। बहुत अच्छा, प्लेटी बनते आ गया। Let us see that cold mountains are seen due to the first question, so volcano दो में बनेगा, एक में नहीं बनेगा, और तीनों में आएगा, ठीक है। कोल्ड माउंटेन एक में बनेगा, ओ में बनेगा, कोल्ड माउंटेन, ओ में नहीं बनेगा, ओ में नहीं बनेगा, सीसी में बनेगा कोल्ड माउंटेन, शिव संकलन में, एंड उसी में बनेगा फ्रेंच, उसी में बनेगा, उसी में बनेगा, उसी में बनेगा, सीसी में बनेगा, ओ में बनेगा, ओ में बनेगा, ओ में बनेगा,
For volcano trends to be formed, one plate must be oceanic. For old mountains to be formed, ओल्ड माउंटेन के लिए आपको एक तो लैंड रन नहीं पड़ेगा, समझ गया, उसमें उसमें बन रहा था, ठीक है। नॉट ब्लॉक माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग डाइवर्जन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन आपको डाइवर्जेंस के वक्त मिलता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब कुछ दिक्कत नहीं होता। अर्थ स्वैम्स, नीसन एंड्रियास फॉल्ट है, नो वोल्केनोस फॉर्म। ड्रॉबैक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक एग्जिस्टेंस ऑफ वोल्केनो इन सम एरियाज अवे फ्रॉम द डाइवर्जन एंड कन्वर्जेंस जोन्स। वहाँ कैसे समझा, वहाँ पे आप जैसे कि वहाँ पे वो हुआ था ऐसा कुछ मेंटल प्लूम वोल्केनोस वोल्केनिक वोल्केनो पाथ सेंट्रली फिसर, तो जो सेंट्रली था वो आपको देखा सबडक्शन से बना था, और ये फिसर फिसर वाला आपको मोस्ट डाइवर्जन से बना था, कन्वर्जन से डाइवर्जन से, ठीक है। सबडक्शन से बना था। क्रेटर, क्रेटर में 1.5 होता है। वोल्केनो फॉर्म एट टाइप ऑफ लावा, एसिडिक लावा, बेसिक लावा, बेसिक लावा, लेकिन ये मेटलिक, ये फ्लो कम। एसिडिक लावा का ऑफ कोर्स अगर मेटालिक कम है तो फ्लो कम होगा। सिलिकन ज़्यादा ना हेवी है, सिलिकन हेवी है तो नहीं होगा। एसिडिक धीरे होता है, बेसिक ज़्यादा होता है, सिलिकन ज़्यादा केवल। मोर एरिया कवर, लेस एरिया कवर, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा ऊपर भी रहता है, ऊपर मोर मेटल मोर हैवी, मोर मेटल मोर हैवी कैसे मेटालिक इस, हाँ मेटालिक इस हेवी पार्ट। VCS अलग चीज़ है। यहाँ पर मोर एस आई वही तो इसका सिलिकन चलता है भाई। ओसनिक फ्लोर जो है हेवी मेटल्स, ओसनिक फ्लोर लार्ज, इट मीन्स मोर लावा फ्लो, बेसिक लावा रहा होगा, सिलिकन कम रहा होगा, सिलिकन कम रहा होगा। इट मीन्स मेटालिक एंड्रस ज़्यादा रहा होगा, मीन्स हेवी ज़्यादा है। मोर मेटल्स मोर हेवी, इसमें मेटालिक 20% है, लेस VCS ज़्यादा है, सिलिकन इसमें सिलिका है, मोर VCS। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुश्किल से तैर रहा है। हैवी हैवी, ये भी पता चल गया ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट, वोल्केनो माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन, सब चीज़ एक बार लिख के देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ। वोल्केनो माउंटेन जो है लेस एसिडिक लावा, एसिडिक लावा मतलब सिलिकन ज़्यादा, ठीक है। हाई VCS लावा प्रेजेंट, समटाइम्स ब्लॉक विद एन अकर, लेस फ्लो मतलब कम, ज़्यादा नहीं, लेस फ्लो मतलब एसिडिक, कम मतलब एसिडिक, कम मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब एसिडिक लावा, एसिडिक लावा मतलब उसमें कम है, मतलब सिलिका ज़्यादा है, मेटल कम है, मेटल कम है, मेटल कम है, सिलिका ज़्यादा मतलब हाई VCS मतलब मल्टीपल वोल्केनो चार बार कैल्डेरा बोलते हैं, कैल्डेरा, कैल्डेरा लेक, लोनार, लोनार लेक, लूनार लेक, लोनार लेक, लावा कॉल्ड ठेपरा, सेंडर, सेंडर। पायरोक्लास्टिक फ्लो, लहर, लहर, पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक फ्लो लावा से राइट। टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल करप्शन, द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, एक्टिव डोरमेंट एक्सटेंट, फीजर एंड सेंट्रली, ये देखिए कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस बनता है वोल्केनो फॉर्म्स, वोल्केनो। खाना खाएगा? ये क्या है? वही
सांबर आज तो सभी ने डाला था है ना। केस बढ़ रहा है क्या भाई? मुझे वो लग रहा है वो उसने भी ओनर ने भी वो कभी नहीं डालता भाई। मारो मुझे मारो। आपके कंसेप्ट करने के लिए ये मैडम ने समझाया नहीं था ना, इस सिर्फ ऐसे डायग्राम के ऊपर ऊपर से बताइए। समझाया होता तो मुझे समझाओ। चार्टर वो डेफिनेशन लिखा है एंथ्रोपोलॉजी में छोड़ दिए पढ़ना। वो पढ़ाई थी क्या ये? पढ़ाई थी यानी वो लिख कर दिए कहाँ पे तो पढ़ाई थी, इसमें पढ़ाई थी लेकिन आरसी ब्राउन में। लेकिन वो ऐसे ही मिस्टेक को किया था ना। दो जगह ये बनाई थी शायद, मेलनस्की मेलिनोस्की में और एक मेलनस्की में। और कहाँ पढ़े ऐसे? चार्टर मतलब नहीं वो बताया ऐसे डेफिनेशन दिया है। हाँ हाँ। और ये ऐसे ऐसे लेकिन ये ऐसे ये लिंक नहीं बताया, ये लिंक क्या है ऐसे। नॉर्म्स मतलब जैसे चार्टर में मतलब जैसे कि बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशन काम करेगा कैसे, उसका ये चार्टर है। हाँ। इसमें आपको एक नॉर्म्स है। नॉर्म्स मतलब क्या है कि उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हाँ। पर्सनल मतलब उसमें जो भी डेजिग्नेशंस हैं। हम्म। डेजिग्नेशंस मतलब लोग, जैसे हॉस्पिटल है तो नर्सेज, डॉक्टर्स, बीमार, ये सब का। स्कूल है तो प्रिंसिपल, प्यून, टीचर्स, स्टूडेंट। और उनके बाद उनको एक मेटेरियल अपैरेटस, जैसे स्कूल है तो आपको वो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है वो सब रहेगा। हॉस्पिटल है तो बेड रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। एंड अपैरेटस जिसपे वो लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जैसे वो मटेरियल जो मिला है टीचर को वो पढ़ाएगा, वो उसको मिला तो डाइसेक्शन करेगा, ऑपरेशन करेगा। एंड दिस इज हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन। एग्जाम में कैसे ली? क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं दिया तो बताइए मैडम ने ऐसे, लेकिन लिखने का कैसे समझ आया क्या? उन हम तो एनालॉजी से बता दूँ। हाँ ऐसे बताइए कि हाँ ये हेल्थ एजुकेशन का बताइए कि कैसे ऐसे खाना खाने वाले हो। ये फर्स्ट आपको बताते आते ही क्या है हाँ? कैसे वो बताते आपको। आप बताइएगा। आप हाँ इधर वो क्या बोलता है कि चार्टर इज द सिस्टम ऑफ वैल्यू सिस्टम है चार्टर, सिस्टम ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे क्या बताना, ये क्या है सब चार्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन है इधर। तो ये क्या बताते हैं कि चार्टर इज वैल्यूज ऑफ सिस्टम ऑफ विच ध्यान में नहीं आ रहा है क्या था वो इंस्टीट्यूशन। So here now we are stopping our presentation.